Hello learners, I welcome you all in today's live class to secondary learners. Today we are going to discuss about the topic production. Now before coming to this topic, I would like to discuss that in your surrounding, you must have seen the various type of a small producing unit which are providing a lot of goods and services, and these goods and services are being supplied in the market and available to the common people, consumers, to meet their needs and requirements. है ना ऐसा? बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी फैक्ट्रियां, प्रोडक्शन यूनिट आपने देखा. आप देख रहे हो कि वहां पे प्रोडक्शन का कार्य हो रहा है. वहां पे रॉ मटेरियल्स जो है, मशीन्स जो है वो लगाई जा चुकी हैं और वर्कर्स उसमें काम कर रहे हैं. काम करके वो कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. इस तरह से हम प्रोडक्शन के प्रोसेस को होते हुए देखते हैं. लेकिन theoretically we don't know what is the production, what is the meaning of production, what are the various dimensions through which the goods and services are produced to meet the needs and requirements in our day to day life. हमारे डेली लाइफ की जरूरतें कैसे पूरी होंगी हमें नहीं पता होता. You must have a look on this picture. What you see there? You see the uniform of these persons, what they are doing. They are performing some activities to produce goods and services. Now this is just like a symbolic thing which you have seen. Now a machine is there, uniform is there. Now they also use helmet for the purpose of security, for the purpose of avoiding injury during the production process and performing their activities. Is that clear? But before coming to the discussion, I would like to sketch out, list out the various objectives. हमारा उद्देश्य क्या है, हम किन उद्देश्यों के लिए इसे पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या फायदा होगा, कैसे हम प्रोडक्शन के प्रोसेस को समझ पाएंगे, क्या प्रोड्यूस किया जाए और किस तरह की उसकी प्रोसेस अडॉप्ट की जाए. ये सब सारी चीजें जो हैं हम इसके उद्देश्य के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि चर्चा में जो है हमारे इन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है कि नहीं, हम जो सीखना चाहते हैं, हम जो जानना चाहते हैं, क्या हम वो जान पा रहे हैं कि नहीं. तो इस तरह से जो है हम इसको स्टडी करेंगे. तो आइए सबसे पहले हम इसके उद्देश्य की चर्चा करें, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में समझें कि इसके वेरियस ऑब्जेक्टिव्स क्या है. See, what is the first objective? Explain the concept of production function. See the term production function. What does it mean? क्या कहना चाहता है ये? Production function. It means that this is the term on which all concepts revolving around. Then we will be able to understand the concept of production process. See the term. Let me give a brief idea about this so that, in coming slides, you will see the details of the various terms and the concept through which you can be able to understand
the entire description of the topic production. See, production function consists of two words. Production, you know, which I told you, कि गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होता है फाइनल शेप एंड साइज में जो हमारे पास अवेलेबल होता है, दैट इज द प्रोडक्शन. बट हाउ, व्हाट डज इट मीन? what is the meaning of the term function? To understand this, we will discuss about, a relationship between inputs and outputs. Then we will be able to understand the term production function. Let us move further. Different techniques or methods used to produce goods and services. See, what do you mean by the term techniques and methods? This production function is based on the process, based on techniques. What do you mean by the term technique? टेक्निक क्या, टेक्निक का मतलब आप क्या समझते हैं? बहुत वाइडर टर्म है, हर जगह इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन हमने कभी इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि एक्चुअली टेक्निक होता क्या है. टेक्निक का सिंपल और सीधा मतलब है कि यह एक सोशल पूल है जो वेस्टेज को रिड्यूस करता है और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है. This is the general connotation for the term techniques. You can utilize this term anywhere, anyway, whenever you learning something, willing to know about the planning and policies, methodology to understand a basic concept of any things. This is the very general term. But here it is confined to the term production. Production technique it talks about. It means that कि प्रोडक्शन में वो कौन कौन से टूल्स इक्विपमेंट्स हम यूज करें जिससे कि हमारा वेस्टेज जो है वो रिड्यूस हो और हमारी प्रोडक्टिविटी जो है, कार्य करने की क्षमता जो है, आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो. क्लियर? नेक्स्ट टू दिस, एक्सप्लेन द टर्म टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड marginal product, which will provide you the basis to understand the production, that is known as TP. Average product, it means that, what does it mean? Per unit production. It talks about per unit of production of a factor of production. Clear? Keep in your mind the term factors of production. I will explain all these things. So here this term is implied over here, and in production function it is also be discussed. Next to this, illustrate the law of diminishing marginal product. What does it mean? Now, whenever the marginal product is studied, we come to know about the additional product by the utilization of the additional factors of production. Now, it was just like on experimental basis, but whenever the term has been generalized, now it has got the status of law, that is called law of diminishing marginal utility. What do you mean by the term diminishing? Reducing, कम होना. Marginal means additional. And product means, you know, the unit of goods and services. Clear? Next to this.
explain production process and organization of production activity. Production process and organization of production activity, which I told you earlier that about the process. Now the entire production concept has to pass through a process. Then we will see that the final product, that is called output, is there. Clear? Output means goods and services which you have produced by utilizing the various types of inputs. In other term, it is known as factors of production. Next to this, and how it is, the process is being organized, what type of activities are performed. Next to this, recognize the role of factors of production. Repeatedly I told you the term factors of production, but here we will discuss about the role, भूमिका क्या है इनकी, कौन कौन से factors of production. 4 factors of production are taken into consideration, that is known as land, labor, capital and entrepreneur. Land, labor, capital and entrepreneur. When all these 4 factors of production are combined together, now what we see? We find out output. तब हमें उत्पाद प्राप्त होता है, प्रोडक्ट प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है. नेक्स्ट टू दिस, डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री. बहुत बारी को वेरी कॉमन टर्म है ये. आपने इंडस्ट्री भी कई बारी सुना है, फर्म भी कई बारी सुना है, बट उसकी बारीकियां क्या है, कैसे इन दोनों में हम विभेद करेंगे, कैसे इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या डिस्टिंक्शन है इन दोनों के बीच में. कई जगह आपने देखा भी होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे फर्म लिखा हुआ है, और कई जगह आपने देखा है कि यहाँ इंडस्ट्री लिखा हुआ है. बट देयर एग्जिस्ट अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्म्स. फर्म इज द स्मॉल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स. Firm means small producing unit, whereas industry means the collection of firm is known as, constitutes industry. साइज की भी बात कर लें, फर्म छोटा होता है, इंडस्ट्री बहुत बड़ा होता है. क्लियर? बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेज हैं, but here we are not concerned about the difference. The basic idea we must keep in our mind to understand whenever the firm is used, then for what purpose the firm is being used over here. If we talk about the industry, now the first thing must be flashing in our mind that now this is the collection of firm that constitutes industry. Next to this, identify the types of producers in the economy. बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, फॉरेन कंट्री से भी प्रोडक्शन आता है, अलग अलग कैटेगरीज हैं इनके. कोई अकेला प्रोड्यूसर है, कोई एक साथ मिलकर काम कर रहा है, किसी में 10 लोग 5 ग्रुप मिलकर काम कर रहे हैं, जिसको आप कहते हैं सोल प्रोप्राइटर्स. सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप कंपनी, कॉरपोरेशंस एंड द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के भी अलग अलग पार्ट हैं, कुछ डिपार्टमेंटल है, कुछ नॉन डिपार्टमेंटल है. कुछ कॉरपोरेशंस के तौर पे काम करते हैं जो नॉन डिपार्टमेंटल है, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के रूप में काम करते हैं वो डिपार्टमेंटल है. सो दीज आर द वेरियस एस्पेक्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड अंडर दिस single term that is called production. Clear? Once, why I am explaining this thing objectives, I am not supposed to read it out over here. हम पढ़ लें ऑब्जेक्टिव को और हमें समझ आ जाए, ऐसा नहीं है. Once the objectives are clear in your mind, then obviously the concept will be quite clear
Otherwise, you will waste your time to make a relationship between objective and the explanation what an instructor, what a facilitator is explaining in front of you, or you are watching the program. So it is quite obvious to understand the objectives. Once again, I am telling that once objectives are clear in our mind, obviously no subject will be difficult and tough to have a comprehensive ideas and knowledge about that particular concept. Clear? Let us move further. Let us see the first term. Okay? Production function. What does it mean? कैसे समझोगे आप? Have your micro observation of this equation. You will find the shortest way to understand the concept and rewrite in your computer-like mind. Clear? Production function is the physical relationship between inputs and output. See, nothing is new. हम कोई अजूबा टर्म यूज नहीं कर रहे हैं. ऑब्जेक्टिव्स में ही मैंने क्लियर कर दिया था कि ये इनपुट्स और आउटपुट होते क्या है. अब आपको रिलेट कर लें. आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव भी क्या था? प्रोडक्शन फंक्शन. और जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. क्या डायमेंशन है उसका, कितना फैलाव है, हम क्या क्या चीजें इसमें सीख सकते हैं. और हम ये भी यहां पे सीख पाएंगे कि फंक्शन वर्ड का यहां रेलेवेंस क्या है, इसका संदर्भ क्या है, क्यों हमने फंक्शन वर्ड यूज किया है, कैसे ये हमें एक्सप्लेनेशन में ये हेल्प करेगा. क्लियर? सो ऑब्वियसली जब आप सीखने बैठेंगे तो आपकी जो क्वेरी है, आपके जानने की जो इच्छा है, आपका अर्ज टू नो वाली पोजीशन जो है, जिज्ञासा है, उसको आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे. सो सी द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इनपुट्स? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. क्या कहेंगे आप उसको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. कितने होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. 4 होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एंड देन यू माइट बी आस्किंग द क्वेश्चन कि इनको कंबाइंड करा और आउटपुट कैसे आ गया? ये कोई जादू की छड़ी थोड़ा ही है. यू सी, ये एक जनरल टर्म है. कहीं भी आप प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, आप देखते हैं उसके लिए जमीन चाहिए होता है, वर्कर्स चाहिए होता है, पूंजी चाहिए होता है, कैपिटल, जिससे कि आप मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स परचेज कर सकें. और एक ऐसा बंदा होना चाहिए था कि जो इन सारी चीजों को अरेंज कर सके. दे आर कॉल्ड, द पर्सन इज नोन एज एंटरप्रेन्योर. एक बंदा ऐसा है जो इन सारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन कर रहा है. साथ में वो क्या प्रोड्यूस करना है, उसके लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए, उसका भी इंतजाम कर रहा है. प्रोडक्शन होने के बाद उसे मार्केट तक पहुंचना है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, उसका भी इंतजाम वो करेगा. कैसे क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट लाया जाए, इसका भी ध्यान रखेगा वो. इट मीन्स दैट कि एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल who who has courage to bearing the risk in his mind during production process of goods and services. Clear? So, you see, have a look on this equation.
have a look on this equation, what it talks about. Q is equal to F functionally related to LKS. It means that Q is the function of L, land, labor, K, that is capital, S, that is land, soil. Now it is a symbolic. You can use the term of your own choice, but you have to mention all these things over here. L is labor, K is capital, S is equal to land. ये मेंशन करना होगा आपको, लिखना होगा यहाँ. Otherwise, a single letter might be having so many starting point of words. Now, so what we see that these are functionally related to each other. You see, any change in this factor obviously will change the level of output. What does it mean? Suppose 10 workers are working at a particular place in a particular production unit, and what we find, only 100 units are being produced. Now, 5 more workers have been added in this number. Now the total number of workers is 105. How it will have an impact on the total production? It means that कि 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं, 5 और ऐड हो गए. 10 वर्कर्स जो है वो 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 5 और ऐड हो गए, तो टोटल यूनिट कितना प्रोड्यूस हुआ? 105 यूनिट्स. It means that what you see, change in this factor will show its impact on total output. So this way we understand the things. Any change in these factors will make a changes in the level of output. Now see capital. Suppose you have invested more amount in the business. What you see, resultantly you will find that the production of that particular commodity which you are going to produce will increase. Clear? So this way they are functionally related to each other. It means that change in one factor will certainly have an impact on the level of output. So this way we understand the basic concept of production process. Clear? So now let us take a small break, learners. After the break we will continue the remaining part of the topic. करने राहों को आलोकित करने, जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, जीवन
जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने हम, अपना जीवन स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बहुत, कोई मन चाहा केंद्र चुने हम, अपना जीवन स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने हम, Hello learners, welcome back to live class. So what we were talking about, the production function, which is explanation. So the thing is quite clear. Let me conclude this part of the concept. The thing is quite clear that there exists a physical relationship between inputs and output. Inputs means factors of production, output means goods and services. Clear? And both are functionally related to each other. You see the equation. Keep in your mind that equation will give you a basis to explain the concept of production function. Let us move further. Different technology of production function, which we talked about this in objective of the topic. What it was? Techniques of production. What type of technology we are using during the production process. So here you have a look on this picture. No need to write a lot of things over here. Now just develop your observation to understand the basic concept of the techniques of production. अगर मैं बात करूं कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है और यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्लियर, और यहाँ जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें हेवी मशीन का यूज किया जाए तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, कैसे ये इम्पैक्ट करेगा हमारे लार्ज पॉपुलेशन को। गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी तो हो जाएगी,
लेकिन लोगों के पास इनकम नहीं होगा परचेज करने के लिए। तो इसको हम क्या कहेंगे? इनकम अर्न करने के लिए हमारे पास एम्प्लॉयमेंट का होना जरूरी है। इस वास्ट कंट्री में अगर हम काम नहीं कर सके, एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सके, तो हमारी अर्निंग नहीं होगी। एंड अ लॉट ऑफ पीपल, मास पॉपुलेशन will be devoid of having the earning to meet their daily needs, the requirements of day-to-day life, the basic necessities of life. But अगर हम यही डेवलप कंट्रीज की बात करें, जैसे अमेरिका की बात करें, what happens? What is going over there? They are using machines, tools, equipments, heavy, big industries to produce goods and services because they are lacking the labor force to perform their duty. See the gap. कहीं पॉपुलेशन इतना ज्यादा है और कहीं पॉपुलेशन कम है. So now imbalance has been created. Whenever we discuss about the techniques of production, we have to develop the perspective to understand the concept that the countries where population is very large, very high, now in that country, what techniques should be appropriate, what the country should use the technique of production. This country must be having apply and use labor intensive technique of production. Labor intensive techniques of production. And those countries where population is less, then must adopt capital intensive techniques of production. Capital intensive techniques of production. Clear? So I think कि ये अब आपको कंसेप्ट जो है पार्शियली क्लियर हो गया होगा. लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो है वो टेक्निक है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लेबर को यूज किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा लेबर को काम मिल जाता है और वो अपने लाइवलीहुड अर्न करने की पोजीशन में रहते हैं. वो अपने जीवन यापन के लिए इनकम अर्न करते हैं. तो जहां पे लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हो, लेबर फोर्स हो और लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज होता हो, इंडस्ट्रीज में टूल्स, मशीन, इक्विपमेंट्स यूज होता हो, देन दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज लेबर इंटेंसिव टेक्निक. टर्म के नाम से ही पता है आपको, लेबर इंटेंसिव का ज्यादा से ज्यादा लेबर और कम से कम कैपिटल. Whereas the other part is talking about the capital intensive technique. What does it mean? अधिक से अधिक कैपिटल यूज होगा और कम से कम लेबर फोर्स यूज होगा. You see the example of some countries. Once I gone through the house building process in America. What I have seen there, you won't believe. मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा कि यहां पर जो है लकड़ियों और लोहे से जो है वो घर बना दी जाती हैं, जो किसी ईंट और सीमेंट के घर से कमजोर नहीं होता है, और कई फ्लोर बन जाते हैं उसमें. Now they have developed their techniques and technologies. They are utilizing their capital because they don't have a large mass of population to get them involved in दीवार खड़ी करो और छत की ढलाई करो. In turn, they have developed their techniques too. They have developed their tools, equipments, machines
through which all roofing work is being complete. So this is the thing over here. Have a look on this picture and you just see. जहाँ मशीन यूज हो रहा है, हेवी मशीन्स यूज हो रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन होता है वहाँ, जहाँ पे ज़्यादा मैन पावर यूज हो रहा है, लेबर फोर्स यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. So the picture is self-explanatory. Have a look, picturize the concept in your mind, you will be in position to explain all these things. वैसे भी ऑडियो विजुअल का जो मीन्स है वो ज्यादा इंपैक्ट करता है लर्निंग प्रोसेस को. जब कोई कंसेप्ट बहुत समझ में ना आए, प्रॉब्लम लगने लगे, उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स जो है वो डिजाइन कर लो माइंड में. आप लोग देखोगे कि सीखने का एक बहुत अच्छा टेक्निक है. मैं ये अच्छी तरह समझ रहा हूं कि आप डिफरेंट एज ग्रुप के लर्नर्स हो, मुझे पता है ये बात. दिमाग सबके पास है, सीखने की शक्ति सबके पास है, हमें सीखने का तरीका पता होना चाहिए. क्लियर? So that is why such type of pictures are being depicted in the slides to make you people know about the concept, understand the concept and have a picture view about the concept. Clear? Now let us move further. Division of labor. What do you mean by the term division of labor? कैसे समझेंगे आप? जब कभी भी मौका मिले, टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर होम. कैसे समझेंगे इसको? डिवीजन ऑफ लेबर को कैसे, इसके कंसेप्ट को आप समझ पाएंगे? नाउ इन एवरी फैमिली, father, mother, brother, sisters, 4-5 people are there in a family. What happens? Father is earning money, mother is managing home affairs, आपके खाने पीने का इंतजाम, आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, या खुद एज ए पेरेंट्स आप भी ऐसा करते होंगे. बच्चों की देखरेख करना है, परिवार के लिए सुरक्षा का भी इंतजाम करना है. घर में जो लेडीज हैं उनका अपना रोल है. इट मीन्स दैट कि एक घरेलू कार्यभार को कई लोग मिलकर कर रहे हैं. ठीक है? इसी तरह से जब प्रोडक्शन प्रोसेस की बात होगी तो बहुत जनरल सा कंसेप्ट है ये, और उसका इंपैक्ट भी दिखा कि जब हम इसको अप्लाई करते हैं इस तरह से तो कैसे वो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस के स्पीड को रेगुलेट करता है, सही डायरेक्शन में ले जाता है, और गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है. जैसे देखिए आप, तो डिवीजन ऑफ लेबर, इट मीन्स द वर्क इज माइन्यूटली इन डिफरेंट पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज बीइंग हैंडल्ड बाय द स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ पर्सन. जनरल कंसेप्ट है ये कि वर्क को का डिवीजन हो गया और हर काम को परफॉर्म करने के लिए एक बंदा जो है उस पर उस एक्टिविटी को करता है, परफॉर्म करता है. बट इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस व्हाट वी सी दैट इट हैज 2 कैटेगरीज. कैसे? प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर एंड process based division of labor. What it talks about? Product based division of labor, what it talks about? Right from the raw material to final product, the work is handled by a single person. The work is handled by a single person. See, cobblers का एग्जाम्पल ले लें.
क्या करता है, एक मोची क्या करता है, एक लेदर का जूता बनाने वाला मोची क्या करता है, रॉ मटेरियल से लेके उसकी पूरी शेपिंग, साइज, सब कुछ करने के लिए वो छोटे लेवल पे, स्मॉल स्केल की बात मैं कर रहा हूं। डू नॉट मिक्स कि यहां लिबर्टी और एक्शन की बात करें। और फाइनली क्या करता है, वो सारे कंपोनेंट को एड अप करके वो एक शूज तैयार कर देता है। नाउ द पर्सन हैज बीन स्पेशलाइज्ड to convert the raw materials into final product. This is what we say that product based division of labor. इसी तरह से बहुत सारे ऐसे छोटे लोग हैं। आप सिलाई मशीन में देख लें कि जो सिलाई करता है वो कैसे कपड़ों को जो है उसकी सिलाई करके फाइनल प्रोडक्ट के रूप में। आप कारपेंटर को देखें, जो छोटे लेवल पे जो ये व्हाट वी से दैट लोहार काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, ब्लैक स्मिथ वाले, उनको देखें आप। तो व्हाट हैपेंस इफ सच टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडिविजुअल सिंगल हैंडेड पर्सन, देन इन दैट सिचुएशन व्हाट वी सी, that is known as product based division of labor. Basically इस तरह का जो division of labor होगा that is at a small scale, बहुत छोटे लेवल पे होगा। आपके शहर में, आपके गांवों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक स्पेशलाइज्ड वर्क को करते हैं और वो काम वही करते हैं। उसकी जितनी भी प्रोसेस है छोटे लेवल पे, द सिंगल पर्सन इज, सिंगल इंडिविजुअल इज परफॉर्म। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट, प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, व्हाट इट टॉक्स अबाउट। टेक द एग्जांपल ऑफ टेक्सटाइल मिल। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, व्हाट वी सी दैट, व्हाट वी नीड, कॉटन, raw cotton. Now, then, what we see, उससे धागा बनाया जाएगा, थ्रेडिंग होगा, उस थ्रेडिंग को जो है प्रोसेस किया जाएगा, थ्रेडिंग प्रोसेस करने के बाद उसकी बुनाई होगी, बुनाई होने के बाद वो एक कपड़े के रूप में तैयार होगा आफ्टर निटिंग, देन द डिजाइन एंड कलरिंग्स आर being passed over there on that cloth, and finally पैकिंग होगी उसकी, एंड देन वो मार्केट में आएगा। क्लियर? इट मीन्स दैट किसी की एक रॉ मटेरियल कॉटन से जो टेक्सटाइल के हम डिफरेंट स्टेज को क्रॉस करते हैं, एंड ईच स्टेज इज हैंडल्ड बाय द स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ पर्सन। ऑब्वियस सी बात है कि जो थ्रेडिंग करने वाला है वो कलरिंग नहीं कर पाएगा। अगर वो बहुत टैलेंटेड है तो उसमें एक आधी लोग होंगे। इट मीन्स दैट कि कलरिंग करने वाला एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप है जो कलरिंग के बारे में एक अच्छी नॉलेज रखता है, क्वालिटेटिव नॉलेज रखता है, और वो देखता है कि किस कलर का कपड़ा हम प्रोड्यूस करें जिसकी डिमांड मार्केट में हो। वो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस पर अपनी डिसीजन लेता है। इट मीन्स दैट कि वेन एवर the work is divided in such a way that it means कि हर स्टेज पे उसको हैंडल करने वाला एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप हो। वर्क इज डिवाइडेड इनटू वेरियस स्टेजेस एंड ईच एंड एवरी स्टेज is handled by the specialized group of person is known as process based division of labor.
आगे बात समझ में कि कैसे उसको हम तैयार करते हैं. तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द टॉपिक प्रोडक्शन विच वी डिस्कस इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉपिक. See, total product, average product and marginal product. How do we understand total product? Just recall the objective. It was there. Here we have to understand that what is the conceptual framework of these three terms: total product, marginal product and average product. You see, take the example that जब कभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस होता है तो उसमें कम से कम शॉर्ट रन के अंदर दो फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि अकेला कोई फैक्टर जो है अगर लेबर चाहे कि हम प्रोडक्शन कर ले, दैट इज नॉट बी पॉसिबल, which you have seen that interdependency in different factors of production. So, theoretically what we see that at least two factors are required to process the production function. See, take the example, land and labor. And condition is also there, one factor is variable. And fixed factor, you see. So what we see that land is fixed factor and labor force is variable factor. Okay, take the example. What happens in this? Once the one factor, variable factor, is taken into consideration, what we see there? Two units of goods are being produced. Clear? Now we increase the labor force. एक से दो लेबर होते हैं. Suppose one labor and production. One labor is producing 2 units of output. 2 labor are there. Now they are producing 5 units of output. Clear? 3 labor are there producing 9 units of output. What we see there? The moment we increase the number of workforce,
laborers, what we find? The output increases. There is an arrangement of increase in the level of output, but we will discuss later on. So, 3 labor in combination are producing 9 units of output. Suppose we increase one more labor, 4. What we see? 12 units are being produced. You might be asking the question that ठीक है, 1 लेबर जो है वो 2 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, दूसरा लेबर जो है 5 किया, दो लेबर मिलके 5 किए, 3 लेबर मिलके 9 किए, तो सर ये इंक्रीज होना चाहिए ना. यहां पर 5 यूनिट से बढ़ना चाहिए, इसमें कि 9 और 5 14 होना चाहिए था, बट ओनली 3 यूनिट्स आर बीइंग एडेड. ये 14 की जगह 12 कैसे हो गया? ओके, सो दिस इज द वे थ्रू विच वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. ओके, सो दिस वे वी विल फाइंड इट आउट दैट in what way the productivity of labor increases at initial stage, now it decreases after attaining a certain level of output and it becomes negative, 0 and negative. So 3 stages would be there. First, increases at increasing rate. Second is increases at diminishing rate, becomes 0 and finally becomes negative. And then we will discuss about the AP and MP. So this way we make arrangement and we see, because अगर हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी लिमिट फिक्स है, हमारे काम करने की क्षमता पर भी डिपेंड करता है और फैक्टर्स के एबिलिटी पर, एबिलिटी टू produce goods and services. And this is a very general concept which we will discuss it in the coming topic, diminishing margin, law of diminishing margin product. Clear? Okay. So this way we will understand the entire concept. Remaining part will be discussed later on in the next program, and you have any query regarding this, you can send your query. We will try our level best to answer your query. Okay, all the best. जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने.